Regulation is important to keep things in check, but over-regulation suffocates the economy. दारा आप ओवर रेगुलेशन के इश्यू को हल कर लें, आप एनओसी के कल्चर को खत्म कर दें, आप ब्यूरोक्रेटिक हार्डल को खत्म कर दें। मोर देन 50% आपकी एसएमईज कहती है कि वो बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, उसकी एक ही वजह है द ओवर रेगुलेशन। Where are our Steve Jobs and Elon Musk and Henry Fords? We don't have them. That is because of sludge and regulations. Companies prefer to remain small. They prefer not to expand too much because that means they'll come on the radar of the FBR and the regulator. The first thing is to get companies to produce. एक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर 90 रुपए 100 रुपए है, लेकिन आप इस चीज पे बजट दें कि आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले दवाई की कीमत जो थी वो 50 रुपए थी, तो अब भी 50 रुपए ही होनी चाहिए। तो इस तरह हो नहीं सकता। जब तक हम स्लज रिमूव नहीं करते इकोनॉमी से, वी कैन नॉट गेट टू द $1 trillion इकोनॉमी। अगर हम स्लज रिमूव करते हैं, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इट इंक्रीजेस 3 times, इट मूव्स टू 30% ऑफ द जीडीपी। So now, without further ado, we move to next session, which is regulatory burden and sludge. All of you are student of economics, you would have वो एग्जांपल आप लोगों ने देखी होगी कि अगर एक रूम में 3-4 लोग हैं, so output will be at a constant. अगर बंदे ज्यादा कर दें, so output will increase. But at a certain level, जब आप बहुत ज्यादा बंदे increase करेंगे, तो marginal utility decreases. And further, आखिर में एक टाइम ऐसा आएगा कि that 200 people in a room will eat each other up. So similar is the story of regulation and sludge in Pakistan. Regulation is important to keep things in check, but over-regulation suffocates the economy. So we are saying कि जो extra regulation है उनको खत्म किया जाए so that economy can have a breathe and would not suffocate. So for this, I would like to invite experts from PIDE, Dr. Nasir Iqbal, Mohammed Zeshan, Dr. Usman, please come on the stage. Shahid Mehmood, sir, please come on the stage. And the session will be moderated by Dr. Ahmed Waqar, who has authored the sludge audits in PIDE. Please. Thank you so much, Saddam. Well, we have a very exciting panel with us who have worked on the regulation as well. हमारे साथ डॉक्टर नासिर इकबाल हैं जो कि हेड कर रहे हैं मैक्रो लैब पाइड की। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूंगा। आई वुड आस्क यू गाइस 2 questions and you will have 2 minutes to respond because we are running out of time, so we have to conclude early. So let's start with Dr. Nasir Iqbal. Dr. Sahab, you are heading the macro lab, और recently अगर पिछले 4 साल में देखें तो पाइड जो है वो बड़ा स्ट्रांगली जो डीरेगुलेशन का एजेंडा है उसको परसू कर रहा है। और जैसे अगर आप इमीडिएट रिफॉर्म एजेंडा हमारा देखें, उसमें भी हमने कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं कि अगर डीरेगुलेटरी जो आपके पास इनिशिएटिव है ये इफेक्टिवली आप एग्जीक्यूट कर लें, यू कैन अचीव 3% ग्रोथ इन जीडीपी। तो क्या ये जो डॉक्टर नदीम का रेगुलेशंस पे आइडिया था, इज इट न्यू, इसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, व्हाट द वर्क पाइड हैज डन ऑन दिस? थैंक यू वकार। सो मैंने पाइड को ज्वाइन किया था 2006 में। तो उस वक्त जब पाइड में रिसर्च हो रही थी वो बड़े ट्रेडिशनल टॉपिक्स पे हो रही थी, मिसल फिस्कल डेफिसिट कम कह लें, मॉनेटरी पॉलिसी ले लें या ट्रेड पे, दीज आर द फ्यू टॉपिक्स। लेकिन जब डॉक्टर नदीम ने ज्वाइन किया उस वक्त हमारे पास चंद एक पीएचडी स्टूडेंट थे, तो इन्होंने एक नई जान डाली रिसर्च में। और अगर मैं 2006-7 का टर्न्योर देखे जो कि बहुत शार्ट टर्न्योर था डॉक्टर नदीम का, उस वक्त रेगुलेशन पे पहली दफा पाइड में बात शुरू हुई कि रेगुलेशन नाम की भी कोई चीज है। उस वक्त गवर्नेंस पे बात शुरू हुई कि गवर्नेंस पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। और आई मस्ट से कि उस वक्त डॉक्टर नदीम के आइडियाज को लेके हमारे 3-4 पीएचडी थीसिस उस पे हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन था पाइड की तरफ से इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे इश्यू को इनिशिएट करने में। रिसेंटली जब डॉक्टर नदीम ने ये जो 5 साल का टर्न्योर था, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ये बड़ी साथ ये कह सकता हूं कि जितना भी रेगुलेशंस पे काम हुआ, जो कि हमें हमारे मेजर इश्यूज आइडेंटिफाई करने में और उसका सलूशन देने में जो मेन कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा, मैं बाकी तमाम आइडियाज पे बात नहीं कर रहा क्योंकि बाकी सब बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ रेगुलेशंस पे बात कर रहा हूँ और स्लज पे बात कर रहा हूँ। ये वो मेजर हर्डल है जिसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर किसी ने एजेंडे का हिस्सा बनाया है
या किसी ने पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन चीजों को हिस्सा बनाया है, तो वो हमें ये एक्नॉलेज करना होगा कि ये जो 5 साल का टेन्योर डॉक्टर नदीम का था, इसकी वजह से हुआ है। आज हर स्टूडेंट इस पे बात कर रहा है, आज पाइड का हर रिसर्चर बात कर रहा है, और सिर्फ पाइड नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान के जितने भी थिंक टैंक हैं उन्होंने अपनी रिसर्च प्रायोरिटीज चेंज कर दी। अगर आप अपनी लिस्ट देख लें जो 2 साल में अपनी रिसर्च प्रायोरिटी बनाई है, आपको क्लैरिटी में एक चीज नजर आएगी कि दे आर फॉलोइंग अस, दे आर फॉलोइंग पाइड, दे आर फॉलोइंग डॉक्टर नदीम्स विजन इन टर्म ऑफ improving, in term of developing our country. तो मैं I'll stop it, then I'll come back to that. अच्छा डॉक्टर साहब, एक यही से एक रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम में दोबारा चले गया है और कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की बात दोबारा से शुरू हो गई है। पाइड जो है वो भी रीस्ट्रक्चरिंग की बात काफी देर से कर रहा है। ऑल्दो डिफरेंट आइडियाज हम डिस्कशन में चल रहे हैं, बट व्हाट्स द वन की एरिया एज अ हेड ऑफ मैक्रो लैब यू वुड सजेस्ट दैट पाकिस्तान शुड फोकस ऑन टू गेट रिड ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम्स? जो हमारी पाइड की रिसर्च कहती है, जिस भी मैंने भी एक छोटा सा पेपर किया है रेगुलेशन पे, या जिसको हम स्लज का नाम दे रहे हैं, तो हम इस बड़ी बात करते हैं कि आईएमएफ का हमारा आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम कैसे हो सकता है? तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, और हमारी पाइड की रिसर्च भी यही शो करती है कि अगर हम एक चीज को, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को हल कर लें, हम अपनी जो ओवर रेगुलेशन और स्लज को इकॉनमी से खत्म कर दें, तो आई एम 100% श्योर, और ये एविडेंस ग्लोब इस चीज को एडमिट करते हैं, और हमारी अपनी रिसर्च भी यही कहती है कि एलिमेंट जिसको अगर आप करना चाहें बाकी सबको छोड़ दें, तो खुदारा आप ओवर रेगुलेशन के इश्यू को हल कर लें, आप एनओसी के कल्चर को खत्म कर दें, आप ब्यूरोक्रेटिक हार्डल को खत्म कर दें। मोर देन 50% आपकी एसएमईज कहती है कि वो बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, उसकी एक ही वजह है, द ओवर रेगुलेशन। वी आर नॉट आस्किंग कि आप रेगुलेशंस को खत्म कर दें, वी आर आस्किंग अबाउट द ओवर रेगुलेशन, और हमारी इकॉनमी ओवर रेगुलेटेड है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स देख लें, आप कंप्लायंस का इंडेक्स देख लें, आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस देख लें, किसी भी ऐसे इंडिकेटर को उठा के देख लें जो आपको बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प करता है, वी आर एट द बॉटम ऑफ दैट इंडेक्स। तो मेरे नजदीक एक ही सोल्यूशन है हमारे लिए कि अगर हमने ग्रो करना है, अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर हमने इनोवेशन को प्रमोट करना है, तो द ओनली सोल्यूशन इज कि हम रेगुलेटरी इशू को हल करें प्रायोरिटी बेसिस पे। थैंक यू। वेरी वेल पॉइंट, लेकिन एट द सेम टाइम जो रेगुलेटरी कास्ट है वो ज्यादातर तो हम तो ज्यादा जो अगर हम देखें जितनी भी हमारी इनिशिएटिव्स हैं वो ज्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हैं, बट हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है रेगुलेटरी बर्डन तो एक्चुअल वो फील कर रहा है। तो इसी एंगल से मैं डॉक्टर उस्मान कादिर से पूछना चाहूंगा जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर नायाब ने अपने इंट्रो में भी बताया कि डॉक्टर नदीम ने बहुत सी ऐसी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो कि अब ज़्यादा आम है। तो आई वाज रिसेंटली गोइंग थ्रू योर वर्क, यू आर प्रपोजिंग सनसेट इंटरप्राइजेस। पहले तो हमें ये बता दीजिएगा व्हाट डू यू मीन बाय सनसेट इंटरप्राइजेस? Thank you. Sunset enterprises basically are a term that Dr. Nadeem and I have come up with. It refers to state-owned, unlisted, non-corporatized, stagnant enterprises of Pakistan, SUNSET. It's basically firms which are owned by one or a family of entrepreneurs. They are unlisted on the stock exchange. They are not corporatized as a result, and they are stagnant. They are not growing. Basically, we have done surveys of the engineering industry in Pakistan over the past 2 years. We've covered more than 1,200 firms. And what we find is that more than half of them are owned by a single person or a family. They don't follow corporate governance procedures or methods. Their growth is, as a result, stunted. They don't have access to finance, so they can't grow. They can't innovate. The innovation that we do have is something like the own culture, which we can do without because it's a burden on the consumer. And the true growth that should come from enterprises we don't have. Henry Ford had an idea to make cars affordable for the common man in America, and he did it, the Model T. Elon Musk wants to go to Mars, and he's doing it.
Steve Jobs had an idea to change the world and he did it. Where are our Steve Jobs and Elon Musk and Henry Fords? We don't have them. So why? And that is because of sludge and regulations. Well, this is the question which Dr. Nadeem often posed to us, that why we don't have multi-billion companies. So my pertinent question is that how the regulatory framework, to what extent it is the because of regulatory framework, और ये हमारे कल्चर में ही है कि हम ग्रोथ नहीं चाह रहे होते हैं. Well, basically, what our research showed was that companies prefer to remain small. They prefer not to expand too much because that means they'll come on the radar of the FBR and the regulator. So, and dealing with them imposes a high cost on their business. So they prefer to remain small, unlisted, and avoid all the regulations and not just deal with them. So what's the solution for this, given this environment? Well, the solution is not so simple. You basically have to encourage firms to list on the stock exchange so they have access to finance. You have to incentivize them to become dynamically managed. You have to encourage them to become accountable and transparent. And you have to ensure that they are well financed and they are networked with the global economy so their exports can grow. Right now, we talk about diversification of exports, but you have to produce something to be able to diversify and grow. So the first thing is to get companies to produce and sell in the domestic market and encourage domestic commerce. Then you can go for exports. Well, I will come back to you later on. We will continue this discussion. हमारे साथ शाहिद महमूद साहब हैं. He is expert on pharmaceutical sector. Done a lot of work, fantastic work at PIDE. So शाहिद साहब, हमें खबरें मिलती हैं कि कभी इंसुलिन शॉर्ट हो गई है, कभी कोई फलानी मेडिसिन नहीं मिल रही है. So according to your research, to what extent the regulatory play the role in these life threatening, situations? तो इसमें क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मसला है, या कि जो जैसा कि उस्मान बता रहे थे कि कुछ हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो खुद भी नहीं अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहे, तो इस पे कुछ बताइए हमें. जी थैंक यू. मेन मसला जो है वो रेगुलेशन का है. बेसिकली जो प्राइसिंग रेगुलेशन हम कहते हैं, एक जिसमें मैं कहूँगा कि इरेशनल सी एक, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये हमारे सारे सेक्टर्स में एक सोच है रेगुलेटर की. अब एक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर 90 रुपए 100 रुपए है, लेकिन आप इस चीज पे बजट दें कि आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले दवाई की कीमत जो थी वो 50 रुपए थी, तो अब भी 50 रुपए ही होनी चाहिए. तो इस तरह हो नहीं सकता. एंड दैट इज द मेन रीजन एज आवर रिसर्च एट PIDE हैज शोन कि इस वजह से वी परसिस्टेंटली एवरी ईयर वी हैव शॉर्टेजेस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स. अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ जो कि एक तो PIDE की हाई रिसर्च की बताती है कि उस इट हैज हैड एन इम्पैक्ट, और दूसरा उसी इन द सेम वेन आप लोगों के सामने मैं ये मिसाल बताना चाहता हूँ कि व्हाई इज पाकिस्तान सच अ डिफिकल्ट कंट्री. आई वाज अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द प्राइसिंग रेगुलेशन के उसको हमने रिवाइज करना है. एंड सम ऑफ माय जो मेरी वो सजेशंस थी एक्चुअली दे वर एक्सेप्टेड बाय द कैबिनेट, और उन्होंने कहा है कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं उनकी प्राइसेस को हम डीरेगुलेट कर देंगे, इसको अब हम रेगुलेट नहीं करते. और एक मैंने सजेशन दी थी कि आप इसको डिफरेंशिएटेड मार्केट रखें, ओरिजिनेटर ब्रांड अलग रखें और जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है डोमेस्टिक ब्रांड उसको अलग रखें, उनकी प्राइसेस को. सो अल्हम्दुलिल्लाह दोज वर एक्सेप्टेड. जो हमारी PIDE की रिसर्च थी वो एक्सेप्ट हो गई. लेकिन वेयर डू वी फॉल नाउ? वो 6 महीने से ड्रैप में पड़ी हुई है फाइल, उसका CEO इसको इधर उधर घुमाता रहता है, वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. सो द इशू इज रेगुलेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. अगर आप मैं कहूंगा कि ये इंडस्ट्री में ये मसला है, इंडस्ट्री में 5 to 10% होगा, बट 90% ऑफ इट is regulation, and it is, as our research again has shown, it is really putting lives at risk because we don't have life-saving medicines. They are persistently short. So reform agenda जो है वो reforms itself sludge face कर रहे हैं.
जी अच्छा, बिल्कुल। इसी तरह अगर हम देखें न्यूज में ऑफन आता रहता है कि डिफरेंट मल्टीनेशनल्स जो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे आर लिविंग पाकिस्तान। इज इट बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस या कि हमारी मार्केट वायबल नहीं है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं? सेकेंडली, अटैच टू दिस क्वेश्चन इज कि अगर आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो बेस है वो भी देख लें, इट इज हाईली स्क्यूड। तो वो चंद एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बड़े हो नहीं पा रहे हैं, वो उस तरह से प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं, डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। तो इस सारे प्रॉब्लम में भी रेगुलेशंस का क्या रोल है? इस प्रॉब्लम इनमें भी रेगुलेशंस का, अब मल्टीनेशनल कंपनीज की जहां तक बात आती है तो अगेन 75 to 80% जो है इशू रेगुलेशन का ही है, बिकॉज दे weren't गेटिंग द प्राइस दैट दे वर आस्किंग। वो आखिर में ये हुआ कि बेसिकली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं कवर हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार दिस इज नॉट फीजिबल, सो दे लेफ्ट। दिस इज द वेरी ब्रीफ वर्जन ऑफ इट। कुछ जो है दे लेफ्ट एंड कुछ है वो जेम हो गए यहाँ पे, इन्होंने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनको उन्होंने खरीद लिया, विच हैज अ रिपरकशन इन द सेंस कि वो जो क्वालिटी होती थी वो आपको उस तरह की क्वालिटी नहीं मिलती। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया, सॉरी, इसी से रिलेटेड कौन सा था? मार्केट डायनामिक्स आपकी स्क्यूड। उसमें एक इशू ये है कि माय ओन रिसर्च सजेस्ट कि जो हम मार्केट का अंदाजा लगाते हैं दैट्स नॉट ऑल ऑफ इट। अ, जो लोअर टीयर फर्म्स है जो कि वो बड़ी नहीं होना चाह रही और खुश है कि यार बस हम छोटी ठीक है, वो किस तरह सरवाइव करती है? एक तो उनके बारे में डेटा कोई नहीं है, और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के अपने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तकरीबन 50 से 60 बिलियन। फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है हर साल सर्च करती हैं दवाइयां खरीदने पे, तो वो सारे उनको वो करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि देखें, वो एग्री विद यू कि प्राइस जो है इसको आप मार्केट बेस्ड रखें, लेकिन हेल्थ, ये फार्मास्यूटिकल जो है ये बहुत बड़ा क्रिटिकल एक एरिया है। अभी आपको डिफरेंट जो देखें कि बहुत लो क्वालिटी हमारे पास मेडिसिन आ रही हैं, सो रेगुलेशन, वी डू नीड रेगुलेशंस इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। If you are saying we have to deregulate this sector, what does this imply? Either we have to completely deregulate or re-regulate. नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए रेगुलेशन की, शुड बी देयर, और वो होनी चाहिए क्वालिटी पे, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन पे। वो वहां पे हमारी वो नहीं है। हमारा सारा जोर इस पे है कि 10 रुपए की अगर गोली बिक रही है तो वो 11 रुपए की ना हो जाए। हालांकि अगर आपकी जान बच सकती है 5 रुपए 10 रुपए से तो इसमें तो कोई मजायका नहीं है, एंड पीपल आर विलिंग टू डू दैट, लेकिन हमारा रेगुलेटर इज नॉट विलिंग। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वालिटी एंड लीव द अदर डिसीजंस टू द मार्केट। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ फोर्थ पैनलिस्ट डॉक्टर जिशान है, हु इज एक्सपर्ट ऑन ट्रेड। सो जिशान, आपने ड्यूरिंग योर रिसर्च ओवर द लास्ट 3-4 years, did you find any sludge, any regulatory burden in trade, our trade policy या trade related matters, import export, इसमें कोई है या नहीं? थैंक यू डॉक्टर वकार। तो जैसे ही आई ज्वाइन पाइड इन 2022, तो स्लज पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। सो एट दैट मोमेंट पाइड ने स्लज ऑडिट 2 रिलीज किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर नदीमुल हक। Dr. Ahmed Waqar, he was mainly supervising that research work. It was very fascinating. So PIDE has 3 sludge audits: sludge audit 1, sludge audit 2, and sludge audit 3. So each sludge audit faces on different industry or service. तो मेरा चूंकि ट्रेड पे काफ़ी काम था, डॉक्टर अहमद वकार ने ऑलरेडी प्रोवाइड अ गुड वेरी ग्रेट बेस लाइन थ्रू स्लज ऑडिट्स। तो इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो मेरा जो डिफरेंट एंगल था, आई थॉट कि हाउ डज स्लज कंट्रीब्यूट्स टू द ट्रेड, कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री में स्लज है तो इट्स नॉट द डोमेस्टिक इशू, इट कैन बी एन इंटरनेशनल इशू फॉर पाकिस्तान, राइट? बिकॉज अगर हमारे पास कंपैरेटिव प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, वी कैन नॉट मेक कंपैरेटिव ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली मेरे आइडिया था। सो मैं जो डॉक्टर अहमद वकार और डॉक्टर नदीम का आइडिया था उसके उसको थोड़ा सा ट्रेड वाली साइड पे ले जाना चाह रहा था। तो डॉक्टर अहमद वकार ने ऑलरेडी उस पर काफ़ी काम किया हुआ था, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल गई। जैसा कि इन्होंने कैलकुलेट किया था कि जो सर्च की ओवरऑल कॉस्ट है दैट्स 50% ऑफ द जीडीपी, राइट? तो और फेडरल मिनिस्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, ही हैज अ विजन। उनका विजन है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हाउ टू मेक पाकिस्तान अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक हम स्लज रिमूव नहीं करते इकोनॉमी से, वी कैन नॉट गेट टू द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब तक हम पाई का साइज बड़ा नहीं करेंगे, अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को रीच नहीं कर सकते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमूव द स्लज फ्रॉम द इकोनॉमी।
तो जैसे कि डॉक्टर दुरे नायाब ने इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा था कि BOI also knows the sludge. BOI is a potential stakeholder. उसकी वजह ये है कि जैसे ही हमारी इकोनॉमी के अंदर स्लज है तो हमारी इन्वेस्टमेंट को इसने रोका हुआ है। जैसे ही आप स्लज रिमूव करते हैं, वी आर मेकिंग अ ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर नदीमुल हक के ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग के अंदर अगर हम स्लज को एनालाइज करें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हमने देखा कि अगर हम स्लज रिमूव करते हैं, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, इट इंक्रीजेस 3 टाइम्स। एट द मोमेंट द इन्वेस्टमेंट इज 12% ऑफ द GDP। ठीक है, अगर आप स्लज रिमूव कर दें तो इट मूव्स टू 30% ऑफ द GDP, 3 टाइम्स। वी आर स्टक एट 12% ऑफ द GDP फॉर डेकेड्स। वजह ये है कि कोई रेगुलेटरी बर्डन कम नहीं हो रहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलेटरी बर्डन कम करें इन फेजेस, और इट शुड बी इन फेजेस एंड बी परसिस्टेंट। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम स्टार्ट करती है, देन देयर आर मेनी SRO और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे आप रिफॉर्म एजेंडा स्टार्ट करते हैं, हर कोई चाहता है कि जी मुझे इसमें रिलीफ दे दें, तो गवर्नमेंट स्टार्ट इशूइंग SRO। तो वी नीड टू डिस्कस दैट कल्चर। जब तक हम एक परसिस्टेंट पॉलिसी नहीं लेके आएंगे, लेट्स से दैट रिड्यूस द स्लज। ठीक। ओके, अच्छा, डॉक्टर साहब, इसी में अभी अगर आप अपनी देखें कि ग्रोथ हिस्ट्री क्या है, तो वो बड़ी सेक्टोरल अप्रोच रही है हमारी। हमारा कोई भी ग्रोथ फ्रेमवर्क होगा तो हम सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सेक्टर को हम फोकस करेंगे, यहाँ से हम ग्रोथ जो है वो अचीव करेंगे। तो ड्यूरिंग योर रिसर्च विच सेक्टर यू फाइंड के जिसमें स्लज हाईएस्ट है, और वो कौन सा सेक्टर है कि जिसको अगर हम स्लज रिमूव कर दें तो वो हमें ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा दे सकता है? जो हम मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर नदीमुल हक, उसका प्राइमरी एजेंडा ही यही है। वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि ग्रोथ डिविडेंड किस में सबसे ज्यादा है, ताकि जब हम एक रिफॉर्म एजेंडा इंट्रोड्यूस करें तो उसमें जिस सेक्टर के ग्रोथ डिविडेंड सबसे ज्यादा है, वी स्टार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर। तो जैसा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर ग्रोथ डिविडेंड सबसे ज्यादा है, तो अगर हम उसमें से स्लज रिमूव करते हैं तो आपकी GDP इट इंक्रीजेज बाय 17.5%। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ डिविडेंड सबसे ज्यादा है कंस्ट्रक्शन के। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल। जैसा कि डॉक्टर शाहिद साहब ने भी बात की, फार्मास्यूटिकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर आपने एक न्यू फार्मेसी बनानी है या आपने आपने कोई नई मेडिसिन रजिस्टर करनी है, तो इट हैज़ अ वेरी ह्यूज स्लज इन द सेक्टर। तो मोस्टली इसी वजह से मोस्टली जो फार्मास्यूटिकल है इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती। तो हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में ये देखा, जो CG मॉडल है, कि अगर आप स्लज रिमूव कर दें तो आपका जो फार्मास्यूटिकल है इसमें डोमेस्टिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है कंस्ट्रक्शन के बाद फार्मास्यूटिकल में आता है। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल फॉर फार्मास्यूटिकल, और हम इससे हमारी जो डोमेस्टिक सस्टेनेबिलिटी है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर ज़ीशान। आई विश वी have more time और हम discussion continue रखें। We are running out of time. I have to conclude. Now the floor is open for questions. If you have any question to our panelist, please raise your hand. जी, ये माइक दे दीजिएगा इधर। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह हमने बात की एक्सेसिव रेगुलेशंस की और स्लज की, तो ये तो इस पे हमने पहले भी बात की हुई है और रिसर्च बताती है कि प्रोडक्टिविटी को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और वो सारी चीज़ें हैं। मेरा इस पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो एक्सेसिव रेगुलेशंस हैं, इन माय ओपिनियन वो एक सिम्टम है, और जो रूट कॉजेज हैं उनमें वन ऑफ द रूट कॉजेज इज जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है। तो स्लज को कम करने के लिए रेंट सीकिंग बिहेवियर को हम कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर नासिर, if you Thank you. It's a the rent seeking is some sort of outcome of your weak institution, and that led to these all kind of subsidy structure, and then the PSDB allocation and all kind of other activities. And mainly this, as you rightly noted, that the sludge or the over regulation is also the outcome of these bad intention behind the system, because that will give you some sort of protection. Why we have a cartel in the sugar industry? Why we have some sort of cartel in the automobile industry? Why we have this outdated textile sector and we are subsidizing on the name of so many things? These are all the rent seekers. Those are sitting behind this entire system that are regulating. You
हम इस पे सरप्राइज होंगे कि एक बंदा जो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसको ही हमने हेड लगा दिया कि वो हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, अपनी इंडस्ट्री के या के अपने मुल्क के। तो हमें इस सिस्टम को एज अ होल सिस्टम लेने की जरूरत है। एक तरफ अगर हम सिर्फ रेगुलेशंस को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे जो सिस्टम वर्क कर रहा है हमें उसमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। We have to opt some sort of a systematic approach rather than looking into the one side of the whole system. आई थिंक इसमें दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है। हमारे साथ मुकरम साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने पीआरएमआई का पूरा एक एजेंडा जो है वो रन किया और बड़ा एफिशिएंटली किया। दो चीजें हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी है। आप जो भी रेगुलेटर इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखें। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू ऑब्टेन वन लाइसेंस, द प्रोसेस शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। इट शुड बी मेंशन्ड कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, ये प्रोसेस है, ये फॉलो होगा। तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो रेंट सीकिंग वाला एलिमेंट है वो कम हो जाएगा। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑफ नादरा। देर आर वेरी 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 लेस चांसेस कि आपको वहां पे कुछ इस तरह की रेंट सीकिंग के चांसेस मिले। इसी इनिशिएटिव्स पे काम भी हो रहा है। वो डीप का प्रोजेक्ट जो मुकरम साहब ने डिजाइन भी किया है कि वो यही है कि हम किसी तरह से अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिजिटाइज कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दें, सिंप्लीफाइड कर दें। सो दैट कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस बिहेवियर। माइक दे दीजिएगा इधर आप। विद योर परमिशन आईड लाइक टू ऐड, क्वेश्चन नहीं है, ऐड करना चाहूंगा। दो एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे आपने भी समझा दिया, उन्होंने भी समझा दिया। देयर इज आल्सो अ थर्ड एस्पेक्ट। ये जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है, इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they don't want to reform, they don't want to deregulate, they don't want to bring in transparency. तो जिन मुल्कों के अंदर भी ये सक्सेसफुली हुआ है वहां पे इट हैज बीन ड्रिवन बाय द हाईएस्ट लेवल। तो नॉर्मली जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं, डीरेगुलेशन के प्रोग्राम, दे आर ड्रिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट डायरेक्टली। बिकॉज जहां पे प्राइम मिनिस्टर बीच में कहता है कि ये होना है तो फिर सेक्रेटरी की ये ताकत नहीं होती है, सलाहियत नहीं होती है कि वो उसको अपोज कर सके। सो फॉर अ सक्सेसफुल डीरेगुलेशन प्रोग्राम, फॉर अ सक्सेसफुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्राम, इट हैज टू बी ओन्ड and steered and pushed and followed up by the highest level, जो कि hopefully जो वकार काम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं उसमें, चूंकि करंट प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली टेकिंग लीडरशिप रोल, तो शायद इसकी कोई होप बेहतर हो जाती है। लेकिन वो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि रेंट सीकिंग बिहेवियर की वजह से सैबोटेज कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और होने नहीं देती हैं। एंड द वे आउट इज इट हैज टू बी ओन्ड एंड स्टीयर्ड एट द हाईएस्ट लेवल। फुली एग्री सर। My name is Nigat Ehsan. My question is from Dr. Shahid. Dr. Saab, currently 150 WHO listed life-saving medicines are unavailable in Pakistan. What interventions do you suggest on part of the government to resolve this issue, to make the medicines available for the patients? Two major interventions, and this is a simple one. We've already talked about it. One, deregulate the pricing. Regulator shouldn't be be pricing the medicines and telling the industry that no, you have to sell the drug at 10 rupees or 15 rupees. There are more than 750 firms, and it's a pretty competitive sector, and they'll provide you drugs, medicines. The allopathic medicines are called drugs. So they will provide it to you on very competitive basis if you let them compete. But if you don't let them compete, then it's not going to happen, and we are going to suffer persistent shortages. Second, just concentrate on quality and ease of doing business. And I'll give you one example. There was one firm, an internationally acclaimed firm. It has more than $1 billion in market. It's a huge firm, an American firm. It came to Pakistan, saw the facilities of a domestic producer, and within 1 week, they gave them the permission to produce that medicine in Pakistan. But it took 3 months for the same producer to get permission from the domestic regulator DRAP. So these kind of things have to go. If an international firm is fine with the production in Pakistan and it's fine with the facilities and the quality of it, that firm shouldn't need any NOC from DRAP. So these two things make regulations easier, let the firms compete on pricing,
don't price it. And cabinet should have absolutely nothing to do with pricing. बिल्कुल ठीक है. Let me take one more question, then I will come to you, Dr. Nadeem. So my question ji is, sludge lumps all regulation together, appears to. So there would be इसमें कुछ अच्छी regulation भी होगी, कुछ bad regulation भी होगी. तो क्या वो criteria है जिससे ये good and bad regulation में discriminate करें और अच्छी रेगुलेशन को रखें और बैड रेगुलेशन को खत्म करें? देखिए, स्लज टर्म यूज फॉर अनजस्टिफाइड फ्रिक्शंस, वो रेगुलेशंस जिनकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं है. इट इज वेरी स्पेसिफिक. डेफिनेटली वी आर सेइंग कि रेगुलेशन इज नेसेसरी. जब अभी हम फार्मा की बात कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर इज अ सेक्टर वेयर रेगुलेशन इज अ मस्ट. आप बिल्कुल डीरेगुलेट नहीं होने कर सकते, लेकिन ओवर रेगुलेशन या अनजस्टिफाइड रेगुलेशंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए. उसके लिए जो भी हम बीओ आयोग के साथ काम कर रहे हैं उस पे क्राइटेरिया है. 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं कि इज इट लीगल, इज इट नेसेसरी, इज इट बिजनेस फ्रेंडली. तो वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे आप इवेलुएट करते हैं कि आया ये बिजनेस फ्रेंडली है या बिजनेस इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव है या नहीं. तो वो क्राइटेरियाज वेल एस्टेब्लिश हैं लिटरेचर में. जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी हमें बताती हैं. सर, गुड और बैड पॉलिसी का आप इस तरह से डिफरेंशिएट करें कि एक पॉलिसी में आपका टैक्स इंस्पेक्टर जाता है और बिजनेसमैन को धमकी दे के आता है कि अगर अब तुमने मुझे पैसे ना दिए तो ये बंद हो जाएगा. द पार्ट ऑफ दिस, द गुड पार्ट क्या आप उसको डिजिटाइज कर दें, स्टिल यू आर गेटिंग द सेम आउटकम. डॉक्टर नदीम जी, मैं ये पिछले सवाल की कंटिन्यूएशन में बात करना चाहता हूँ. आई थिंक हमारा मुल्क रेगुलेशन के मामले में बहुत कंफ्यूज्ड है. वी आर नॉट हाफ, वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री. हम चाहते हैं कि प्राइसेस भी कंट्रोल हो, रिलीफ भी मिले, हमें सब्सिडी मिले, हम काम भी ना करें, मुफ्त नौकरी भी मिले, सरकारी खाने भी मिले, फ्रंट सीट भी मिले, गाड़ी भी मिले. ये इसी तरह हम रेगुलेशन पे कंफ्यूज्ड है. तो मैं पैनल से एक चीज पूछना चाहता हूँ, रेगुलेशन होती क्या? जो अभी सवाल पूछा गया था, बड़ा अच्छा सवाल था, गुड और बैड रेगुलेशन. व्हाई डू वी नीड रेगुलेशन? डू यू गाइस वांट योर लाइफ टू बी रेगुलेटेड? जैसे अभी कंटेनर लगा दिए, भी रेगुलेशन है. इज इट गुड रेगुलेशन कंटेनर लगाना? इज इट बैड रेगुलेशन? इंटरनेट बंद कर दिया, इज इट गुड रेगुलेशन और बैड रेगुलेशन? हम इकोनॉमिस्ट क्या समझाते हैं लोगों को रेगुलेशन के? आई थिंक इट्स अ फेलियर. तो प्लीज मुझे पैनल बताए इनकी डेफिनेशन रेगुलेशन की क्या है. थैंक यू सर. रेगुलेशन को जस्ट जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, बहुत सी, जैसे कि वो डॉक्टर वकार के काम ने और हमारा सारा जो पाइड में काम हुआ और इंसिडेंटली अंडर योर लीडरशिप, तो वो हमें यही बताता है कि जितनी हमारी रेगुलेशन है ज्यादातर उसमें से जो है किसी काम की नहीं है, बल्कि वो नुकसान वाली है. कुछ रेगुलेशंस, लेकिन इन जनरल मैं बात करूं, इट्स अ स्पिल ओवर इफेक्ट के दो पार्टीज के दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट होता है या कोई ट्रांजैक्शन होती है, इफ has an indirect effect upon the third party. तो and a negative spillover. उसका ये होता है कि ये कहती है कि देयर इज रेगुलेशन. मिसाल के तौर पर ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए या पुलिस होगी या क्राइम के लिए हमने क्राइम के अगेंस्ट रखी हुई है. सो इट मेक्स सेंस. whether it works properly or not, that's another thing. So there is basis for regulation, but how we implement it, it's just another story. Thank you. Yes, I'll reply to this. What is regulation? Regulation basically is the rules or some sort of set procedure to define or to activate, to promote activities in any kind of activity. It could be like regulating the traffic, it could be expansion of business. So the procedure and the rule set by the government agency, like if you need an NOC to establish a business, to open a restaurant, these are all kind of the regulation that you need this type of permission, that you need to set this type of permission. You know, our focus is not that we have to eliminate all these regulations. The regulations must be fully enforced, and they should come when there is a violation. But in our case, we have a regulation at the upfront, and then we start thinking differently. We should have to revert this narrative. The enforcement, the regulation should come when there is a violation. If there is no violation, let them to do a business, let them to establish a firm, let them to make an investment everywhere in every part of the country. Internet is some sort of necessity. Let them to use this internet. We regulate on the name of security. That's the regulation that hamper your business, that hamper your innovation. So we will talking about these things. Sure. I'll give my perspective about the regulation. Regulation
Ideally, it should provide equal opportunity to all the citizens. That should be the fundamental point of regulation. But in contrary, government क्या करती है? Government revenue start करना शुरू कर देती है जी, get me this NOC and get me that NOC. जैसे कि HEC है, आपको कई जगहों पे जाके अटेस्टेशन कराना पड़ती है, हालांकि यूनिवर्सिटी से डिग्री वेरीफाई होती है, देन यू हैव टू गो टू HEC. तो HEC से सारा रेवेन्यू इकट्ठा करती है. देन कम्स द पावर सीकिंग बिहेवियर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन है अपनी पावर शो करता है, यू हैव टू कम टू अस टू गेट यू NOC. ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपको देयर आर डजन्स ऑफ NOCs हैं, हर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के पास जाके दे आर वेरी इरेलेवेंट, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स years and months to get NOC. थर्ड जो है द रेंट सीकिंग बिहेवियर. ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है अपोजिट टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द बिजनेसेस, सो दीज आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो ऐड करती हैं मिजरी में बिजनेसमैन की. आई थिंक सो हमें फेयर चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, ना कि अनफेयर प्रैक्टिस की तरफ. थैंक यू. With this, I would like to thank the panelists for their contribution, and thank you all.